ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड अल्कोहलिक KOH है। आप सब लोग जानते हो कि अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। दैट मीन्स इधर HBr जो है वो एलिमिनेट होगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। फॉर दिस एलिमिनेशन हाइड्रोजन एंड Br जो है उसको अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो प्रोडक्ट को इजीली फाइंड आउट करने के लिए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको सोहर्स प्रोजेक्शन में लेना होगा। देखो आप सब लोग जानते हो सोहर्स प्रोजेक्शन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। देखो दीज टू कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय हेयर एंड हेयर। सो इधर जो दो टर्मिनल है मिथाइल वो कहाँ आ जाएगा, इधर एक मिथाइल और इधर एक मिथाइल, ठीक है। देखो इस कार्बन के साथ राइट हैंड साइड में क्या है, ब्रोमीन, लेफ्ट हैंड साइड है फिनाइल रिंग। इस कार्बन के साथ देखो राइट हैंड साइड में क्या है, हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, PH। नाउ फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन Br और हाइड्रोजन जो है इसको ऑपोजिट साइड में आना चाहिए। तो क्या होगा, देखो इसको 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो प्रोजेक्शन में चेंजेस क्या होगा, देखो Br आ जाएगा इधर, ऐसे हो जाएगा। देखो Br आ जाएगा अप साइड में, फिनाइल जो है फिनाइल आ गया इधर और CH3 आ जाएगा इधर, ठीक है। और इसको क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेशन कर दो। मतलब क्या है, देखो ऐसे प्रोजेक्शन, हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, CH3 जो है वो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आ जाएगा PH। कोई डाउट नहीं है। उसके बाद एलिमिनेट करो, क्या है, KOH अल्कोहलिक OH माइनस है, तो अल्कोहलिक OH माइनस जो है वो एक्सेप्ट करेगा दिस हाइड्रोजन को, ये बॉन्ड आ जाएगा इधर और Br एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ क्या है, CH3 और इधर है PH और इधर देखो PH है और इधर है CH3। दैट मीन्स प्रोडक्ट में ट्रांस कंपाउंड आ रहा है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। द कॉम्प्लेक्स विल हैव हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आइए देखते हैं इन चारों में से कौन सा राइट आंसर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स क्या है। कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम और उसके साथ देखो 4 डिफरेंट लिगेंड है, NH3, देन ब्रोमीन और लास्ट में Cl। दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नाउ व्हाट इज द टाइप्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज प्लैटिनम और उसके साथ 4 डिफरेंट लिगेंड है, A, B, C एंड D। नाउ इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को आसानी से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितने सारे लिगेंड्स है उस लिगेंड से हम लोग कितने नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर्स बना सकते हैं उसको देखेंगे और वही होगा नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आइए देखते हैं वो कैसे होता है। यहाँ पर लिगेंड्स क्या क्या है, तो लिगेंड्स है A, B, C एंड D। तो पॉसिबल पेयर्स क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट AB एंड CD, AB एंड CD। सेकेंड AC एंड BD, that means AC and BD। थर्ड पेयर इज AD and BC, that means AD and BC। तो इसके बाद और कोई डिफरेंट पॉसिबल पेयर हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल 3 जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। और उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, फॉर द फर्स्ट वन दैट इज सेंट्रल मेटल एटम और उसके साथ फर्स्ट क्या है AB, दैट मीन्स यहाँ पर A तो यहाँ पर B होगा। और अगर सेकेंड पेयर क्या है CD, यहाँ पर C है तो यहाँ पर D होगा। सेकेंड GI का स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ फर्स्ट पेयर इज AC, तो यहाँ पर A है तो यहाँ पर C होगा, यहाँ पर B है तो यहाँ पर D होगा। 180 डिग्री में उसको इनपुट करना है। थर्ड सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद A एंड D और यहाँ पर B तो यहाँ पर C होगा। तो ऐसे ही 3 जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होगा।
और ABCD को यहाँ पर कंपेयर कर लेना है। तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन ए। फ्रॉम द amongst following alcohols the one that would react first with concentrated HCl and anhydrous ZnCl2। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो 4 अल्कोहल दिया गया है, इन चारों अल्कोहल में कौन सा कॉन्सेंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ फास्टेस्ट रेट में रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिएजेंट के बारे में, वो क्या है, कॉन्सेंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ये एक बहुत ही फेमस रिएजेंट है और इसका नेम क्या है, लूकस रिएजेंट। और जब लूकस रिएजेंट अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, वो जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं वो है SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, 3 डिग्री में रिएक्शन रेट सबसे ज़्यादा होगा, देन 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री और सबसे लास्ट में आता है 1 डिग्री। तो कुल मिला के हमारा जो कंक्लूजन आया है वो है इन चारों में से जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसका रिएक्शन रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो आइए देखते हैं इन चारों में से कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है। तो फर्स्ट है हमारा 2-ब्यूटानॉल, दैट इज 2-ब्यूटानॉल। सेकेंड है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, दैट मीन्स प्रोपेन 2-ऑल मतलब CH3C। सेकेंड पोजीशन में मिथाइल है 2-मिथाइल एंड प्रोपेन 2-ऑल, दैट मीन्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड वन। एंड थर्ड इज 2-मिथाइल प्रोपानॉल एंड फोर्थ वन इज 1-ब्यूटानॉल। तो फर्स्ट अल्कोहल इज 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन के साथ OH है, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन डायरेक्टली जॉइन है। सेकेंड जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री अल्कोहल, थर्ड जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री अल्कोहल और फोर्थ अल्कोहल भी 1 डिग्री है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 2। द मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन कहाँ से आया है। एक केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है, फेजन्स रूल, वहाँ से आया है। और फेजन्स रूल को याद करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स होता है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू फेजन्स रूल द कोवैलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द स्पीसीज, मतलब कैटायन और एनायन, दैट मीन्स चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। इसका मतलब क्या है, स्पीसीज में जो कैटायन है और जो एनायन है उसके चार्ज के साथ कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर चार्ज ज़्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, अगर चार्ज कम है तो कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा। और अगर इससे डिटरमाइन नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इससे डिटरमाइन नहीं हुआ तो हम लोग देखेंगे कि कोवैलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एनायन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कैटायन। इस फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है, स्पीसीज में जो कैटायन है और एनायन है, कोई भी एक का अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और अगर इससे नहीं डिटरमाइन हुआ तो हम लोग जाएंगे रेडियस में, और वो क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर एनायन का जो रेडियस है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कैटायन का जो रेडियस है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूला को कैसे हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में कैटायन क्या है, एल्यूमिनियम +3 और एनायन है 3Cl-। सेकेंड ऑप्शन में कैटायन है Mg+2 और एनायन है 2Cl-। थर्ड ऑप्शन में कैटायन है Fe+2, एनायन है 2Cl-। और फोर्थ ऑप्शन में कैटायन है SN+2 और एनायन है 2Cl-। तो यहाँ पर एनायन जो है वो सब के सब सेम है और उसका चार्ज भी सेम है, लेकिन कैटायन में देखो फर्स्ट ऑप्शन में कैटायन का जो चार्ज है वो सबसे ज़्यादा है, और कोवैलेंट कैरेक्टर कैटायन हो और एनायन हो उसके चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका चार्ज ज़्यादा है उसके कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, देखो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्टेंट में क्या है, एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हैलोजन है उसके साथ 3 एल्किल ग्रुप डायरेक्टली जॉइन है। उसके बाद क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल,
ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखो एक आयनिक कंपाउंड आयंस में डिसोसिएट है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो प्रोडक्ट में जो 4 ऑप्शंस है, ऑप्शंस में कौन सा आएगा? तो बोलो तो ये जो रिएक्शन है कौन से मैकेनिज्म से होगा? आप लोग सोचोगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक होगा और लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा। लेकिन देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एक होता है SN1 सब्स्टिट्यूशन और एक होता है SN2 सब्स्टिट्यूशन। SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN1 नहीं होता है। एंड फॉर द SN2 रिएक्शन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN2 नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है फॉर द SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल जो है उसको क्या होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल। एंड फॉर द SN2 रिएक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। देखो क्लियर? नाउ देखो ये जो रिएक्शन है कौन से मैकेनिज्म से होगा। इफ़ यू कंसीडर द SN1 मैकेनिज्म, देखो इसका जो फर्स्ट कंडीशन है 3 डिग्री तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन्स SN1 मैकेनिज्म से ये जो रिएक्शन है नहीं हो सकता है। उसके बाद SN2, देखो उसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट तो है, बट 3 डिग्री में SN2 नहीं होता है, तो इसलिए SN2 मैकेनिज्म से भी ये रिएक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स इधर जो रिएक्शन होगा ये एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। इधर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे है। कार्बन के साथ क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप है, तो लिखो ऐसे CH3, इधर CH3 और ये जो CH3 है इसको ऐसे लिखो CH2 और इधर एक हाइड्रोजन है और लिविंग ग्रुप है हमारा Br। ठीक है, रिएजेंट क्या है, CH3 CH2O माइनस एक्ट एज ए बेस, CH3 CH2O माइनस here act as a base and accept this H+ आयन, ए बॉन्ड इधर टूट के इधर आ जाएगा और Br लीव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट में क्या हो गया हमारा, CH3, उसके बाद C, देखो इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और इधर हमारा CH3। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखो यहाँ पर एक सबस्ट्रेट गिवन है और उसके साथ रिएजेंट है PHS- Na+ और सॉल्वेंट जो है डाइमिथाइल फॉर्माइट मतलब DMF। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको डिटरमाइन करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो किस टाइप का सबस्ट्रेट है। देखो इफ़ यू कंसीडर दिस कार्बन सेंटर, देखो ये क्या है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर है और उसके साथ एक हैलोजन जॉइन है। तो फॉर दिस सेंटर यू कैन से द सबस्ट्रेट इज अ एल्किल हैलाइड। ये एक एल्किल हैलाइड है और वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि देखो जिस कार्बन के साथ हैलोजन है उसके साथ 2 कार्बन डायरेक्टली जॉइन है, एक कार्बन मिथाइल का एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, तो वो एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। क्लियर? Now if you consider this carbon center then we can say the substrate is a aryl halide, क्योंकि देखो ये जो कार्बन सेंटर है ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हैलोजन जॉइन है, तो ये एक एराइल हैलाइड हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर जो CF बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि देखो फ्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा ऐसे, तो ये जो CF बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लेगा। तो इसलिए फॉर दिस कार्बन सेंटर वी कैन से इट इज ऑल्सो अ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। तो अल्टीमेट क्या मीनिंग हो गया, ये जो सबस्ट्रेट है वो एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों का सेंटर है। नाउ हम लोग देखेंगे कि रिएजेंट क्या है। देखो रिएजेंट है एक आयनिक कंपाउंड जहां पर एक नेगेटिव पार्ट है, और आयनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है PHS- वो बिहेव होगा एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और रिएजेंट है DMF। तो ये तो आप सब लोग जानते हो कि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल DMF के साथ होता है तब जो मैकेनिज्म होता है वो है SN2 मैकेनिज्म। तो कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट आया है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल PHS- है वो हैलोजन सेंटर में अटैक होगा और हैलोजन लीव होगा एज ए लिविंग ग्रुप। क्लियर ना? क्वेश्चन इज PHS- जो है वो ब्रोमीन सेंटर में अटैक होगा कि फ्लोरीन सेंटर में अटैक होगा? फ्लोरीन सेंटर में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एराइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टेक पार्ट ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो CF बॉन्ड है वो तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लेगा ड्यू टू द रेजोनेंस। तो हमारा जो PHS- है वो अटैक होगा इन द ब्रोमीन सेंटर और ब्रोमीन जो है वो लीव कर जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ देखिए एक चीज आप सब लोग जानते हो कि SN2 रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है, 100% इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अगर लिविंग ग्रुप अबव द प्लेन में है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच्ड होगा बिलो द प्लेन में। क्लियर? दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पर तो फ्लोरीन एज इट इज रहेगा, यहाँ पर मिथाइल था, और ब्रोमीन लीव हो जाने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होगा वो बिलो द प्लेन में SPH अटैच्ड हो जाएगा, और यहाँ पर तो एक NO2 था ही। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो है ऑप्शन ए। CaCO3 is taken in 1 liter container which on heating decomposes according to the equation, and the equation is CaCO3 solid and which dissociate into CaO solid and CO2 gaseous on heating. The Kp of the reaction is given 1.5 atm at 1000 Kelvin temperature. Calculate the moles of CaO present at equilibrium. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, तो आइए देखते हैं इन चारों में से कौन सा राइट आंसर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन क्या था। इक्वेशन में सॉलिड CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स सॉलिड CaO प्लस gaseous CO2. Now the reaction is a reversible reaction and the value of Kp of this reaction is given 1.5 atmosphere. Now for this reaction अगर मैं बात करूँ Kp के बारे में, तो at equilibrium Kp क्या होता है, you must know Kp equals to क्या होता है, partial pressure of product divided by partial pressure of reactant. Now what are the reactants and products of this reaction? Here the products are CaO solid and CO2 gaseous. That means product के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं partial pressure of CaO into the partial pressure of CO2 divided by, and in the place of reactant we can write the partial pressure of CaCO3. Now यहाँ पर जो CaCO3 और CaO है वो तो सॉलिड स्टेट में है और उसका पार्शियल प्रेशर 1 होता है, तो वी कैन राइट 1 into the partial pressure of CO2 which present in gaseous form divided by the partial pressure of CaCO3 is also 1. That means Kp equals to P of CO2. तो इस कैलकुलेशन का कंक्लूजन क्या आया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 that equals to Kp and which equals to 1.5 atm given. Now इस क्वेश्चन में आपको क्या डिटरमाइन करना है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। नाउ इस रिएक्शन में एक चीज को बहुत ही ध्यान से देखो, वो है रिएक्शन में जितने मोल ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड हो रहा है उतने मोल ही CO2 प्रोड्यूस्ड हो रहा है। सो वी कैन से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO produced that equals to number of mole of CO2 produced in this reaction. Now number of mole of CO2 कैसे डिटरमाइन होगा, तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है द आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV equals to nRT for the CO2 gas. तो we can say P of CO2 into V that equals to N of CO2 into RT. Now the N of CO2 that equals to P of CO2 into V divided by RT. Now put the values.
P of CO2 is 1.5, that means 1.5 into V is given 1 liter container, that means the value of V is 1 divided by R is 0.082 into temperature is 1000 Kelvin. So put it. Now if you calculate it, you get 0.018. So the number of moles of CO2, that is 0.018. Now equation में number of mole of CaO and number of mole of CO2 is equal. तो number of moles of CaO जो produced होगा वो भी 0.018 moles. तो हमारा right answer is option B 0.018. Let's see the question. Number of total isomer possible for this coordination compound. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर आपको फाइंड आउट करना है। और टोटल आइसोमर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर का जो टोटल सम होता है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा है। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनम है, उसको हम लोग M से डिनोट करेंगे। उसके साथ 2 पिरिडिन लिगेंड है, उसको हम लोग A2 से। एमोनिया लिगेंड 2 है, उसको हम लोग B2 से। और 2Cl लिगेंड है, उसको हम लोग C2 से डिनोट करेंगे। और सल्फेट जो है वो तो आयोनाइजेशन स्फीयर में है, उसको छोड़ो। तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया MA2V2C2 टाइप। नाउ हम लोग देखेंगे इसमें नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर कितने सारे हैं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखेंगे A2V2C2 को हम लोग किस तरीके से कितने सारे नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स बना सकते हैं। वो कैसे होता है, देखो लिगेंड्स क्या क्या है, 2A2, 2V2 और 2C2 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AA, BV एंड CC। और इससे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज AA, BV एंड CC, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, A एंड A को फिक्स्ड रखो और उसके बाद BC एंड BC ऐसे हो सकता है। तो VC एंड BC। थर्ड B एंड B को फिक्स्ड रखना है, तो V और V को फिक्स्ड रखो एंड उसके बाद AC एंड AC हो सकता है, दैट मीन्स AC एंड AC। फोर्थ C एंड C को फिक्स्ड रखने के बाद हो सकता है AB एंड AB, दैट मीन्स AB एंड AB। और लास्ट में और एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो क्या है, AB, AC एंड VC, दैट मीन्स AB, AC एंड BC। देखो यहाँ पर जितने सारे कॉम्बिनेशन है एक दूसरे के साथ सब अलग है, तो एक कंपाउंड का 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ GI, नंबर ऑफ geometrical isomer, that means GI, that equals to 5। नाउ हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। और ये तो आप सब लोग जानते हो कि जहाँ पर सिमेट्री होता है वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता है। और इस कॉम्बिनेशन से हम लोग कैसे इसको डिटरमाइन करें, और इसको समझने के लिए मैं एक कॉम्बिनेशन को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है AA, BB एंड CC, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्बिनेशन है जहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम M है और उसके साथ ऐसा कॉम्बिनेशन है। जो फेयर्स है उसको आपको 180 डिग्री में लेना है। फर्स्ट फेयर्स क्या है, AA, तो यहाँ पर एक A होगा, तो यहाँ पर और एक A। नेक्स्ट क्या है, B एंड V, और थर्ड है C एंड C। तो एक कंपाउंड में देखो ये जो AA पेयर है इसकी वजह से क्या मिल रहा है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, तो एक क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट है जहाँ पर ऐसे टाइप का कोई भी सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन मिलेगा, AA, यहाँ पर देखो AA, यहाँ पर क्या है BV और यहाँ पर क्या है CC, तो इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। और लास्ट कॉम्बिनेशन में देखो AB, AC एंड BC, कोई सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर दिस कॉम्बिनेशन AB, AC एंड BC
तो इसके लिए एक मिरर इमेज मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमर। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर दैट इक्वल्स टू 2। तो टोटल आइसोमर क्या है? टोटल आइसोमर दैट इक्वल्स टू हो जाएगा 5 + 2 -1। यहाँ पर -1 क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ए बी ए सी एंड बी सी, वो एक बार जी में काउंट हो रहा है, एक बार वाई में काउंट हो रहा है, तो एक बार तो माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल जो आइसोमर वो हो गया 5 + 2 -1, दैट मीन्स 6। तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आइए देखते हैं इन चारों में से कौन सा राइट आंसर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, केमिकल बॉन्डिंग फेजेंस रूल। तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फेजेंस रूल का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक्स क्या था, कोवैलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन का जो चार्ज है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवैलेंट कैरेक्टर। और अगर एक कोवैलेंट कैरेक्टर कैटायन और एनायन का जो चार्ज है इससे नहीं डिटरमाइन हुआ तो हम लोग जाएंगे उसके रेडियस में, और वो क्या होता है, रेडियस ऑफ एनायन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस ऑफ कैटायन के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा ट्रिक्स है, और इस ट्रिक से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कैटायन और एनायन की चार्ज के बारे में, देखो सबका चार्ज सेम है। सब ऑप्शन में कैटायन और एनायन का चार्ज सेम है, क्योंकि यहाँ पर लिथियम प्लस F माइनस, यहाँ पर क्या है लिथियम प्लस Cl माइनस, यहाँ पर क्या है लिथियम प्लस Br माइनस, और यहाँ पर है लिथियम प्लस और I माइनस। तो सब में कैटायन और एनायन का चार्ज सेम है। तो ये जो क्वेश्चन है इस चार्ज से डिटरमाइन नहीं हो सकता है। तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। देखो रेडियस ऑफ कैटायन भी सब सेम है, क्योंकि कैटायन यहाँ पर सब सेम है, लिथियम प्लस है। तो कैटायन का जो रेडियस है इससे भी डिटरमाइन नहीं हो सकता है। नाउ हम लोग जाएंगे रेडियस ऑफ एनायन। तो कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ एनायन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पर रेडियस ऑफ एनायन ज़्यादा है वहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो रेडियस ऑफ एनायन कहाँ पर ज़्यादा है, I माइनस, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेडियस कैसे चेंज होता है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। तो I माइनस का रेडियस सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए लिथियम आयोडाइड का कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। एन एक्स मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड इन बेंजीन हैज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू 0.2। द वैल्यू ऑफ द एक्स इज। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पर एक सॉल्यूशन गिवन है, और सॉल्यूशन का सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन, वो मेंशन्ड है, और सॉल्यूट क्या है वो मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन 2 यूनिट में मेंशन है। फर्स्ट तो क्या है, एक्स मोलर मतलब क्या है, मोलालिटी यूनिट में मेंशन है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। और एक गिवन है वो क्या है, सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.2, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ द एक्स। तो इसका मीनिंग क्या है, आपको सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलालिटी यूनिट में आपको फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। एक सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है वो मेंशन नहीं है, फिलहाल मैं इसको एस मानता हूँ, प्लस सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन C6H6, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 78। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वो गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं XS से, दैट इक्वल्स टू गिवन 0.2, दैट मीन्स 0.2। और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मोलालिटी यूनिट में x है, और x आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो आप सब लोग जानते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, एंड दैट इक्वल्स टू गिवन 0.2।
तो 0.2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.2 डिवाइडेड बाई 1। तो 1 जो है डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.8। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। Now if you compare left hand side and right hand side of this equation, then you get the number of mole of solute that equals to 0.2 and number of mole of solvent that equals to 0.8। तो ये कहाँ से आया है, ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, आपको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 0.2 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 0.8। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है ये जो सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन इन मोलालिटी यूनिट में। और आप सब लोग जानते हो कि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यूनिट। ना यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, इसको तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि देखो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, ये तो डिटरमाइन हो गया था 0.2, तो इसको पुट करो 0.2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इज 0.2, तो इससे मास कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल इज 0.8, तो इसके साथ क्या करना है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। और देखो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट तो बेंजीन है और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 78, तो क्या करना है 0.8 इंटू 78 ग्राम यूनिट में आ जाएगा इसका मास, सॉल्वेंट का मास। और उसके बाद इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द केजी देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -3। और 10 टू द पावर -3 जो है वो हम लोग यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आपको कैलकुलेशन करना है, देखो काट हो जाएगा 4 से, 4 काट हो जाएगा 250 से, तो क्या मिला है 250 डिवाइडेड बाई 78। और इफ़ यू कैलकुलेट इट यू गेट 3.2। तो अल्टीमेट क्या हुआ है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है जिसका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है 0.2, उसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इन मोलालिटी यूनिट में जो यहाँ पर x मेंशन किया गया है और ये x का वैल्यू क्या है मोलालिटी में 3.2 है। दैट मीन्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी लैटिस। बहुत ही कॉन्फ्यूजिंग करता है इस टाइप क्वेश्चन। तो क्या करना है, फर्स्ट आपको समझना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर होता है लैटिस में, मतलब एफसीसी लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होता है। तो आप सब लोग जानते हो एफसीसी लैटिस मतलब इसका जो रैंक होगा जेट, मतलब नंबर ऑफ एटम, वो क्या है 4 है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो क्या होता है 2Z होता है, मतलब 2 × 4 दैट इक्वल्स टू 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो क्या होता है Z होता है, दैट मीन्स 4। तो ये बात क्लियर है, इसमें नंबर ऑफ एटम है 4, टेट्राहेड्रल वॉइड है 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो है 4। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहाँ पर है, लैटिस के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहाँ पर है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उसका पोजीशन कहाँ पर है। अच्छा, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन। देखो ये जो लैटिस है, लैटिस में जो बॉडी डायगोनल होता है, ईच बॉडी डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। ना बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है, देखो सपोज इधर एक पॉइंट लो और इधर एक पॉइंट हो। नाउ इफ यू ड्रॉ अ डायगोनल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज नोन एज द बॉडी डायगोनल। ये तो समझ में आ गया, दिस इज बॉडी डायगोनल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होता है, ये जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल का जो इधर जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है और इधर जो पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन में क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है,
इधर भी होगा एक टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो ये जो टोटल हमारा यूनिट सेल है, यूनिट सेल के अंदर आपको मिल जाएगा ऐसे टाइप का 4 बॉडी डायगोनल एंड ईच बॉडी डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 4 में क्या हो जाएगा, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन आपको समझ में आ गया। मैं इधर एक डायग्राम दे देता हूँ, इसको एक बार देख लो। अच्छा, उसके बाद आपको देखना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन क्या है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, ईच जो हमारा एज सेंटर है, एज सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। देखो एज सेंटर कितने सारे एज है, टोटल इफ़ यू काउंट टोटल 12 एज सेंटर है। और एज सेंटर में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ईच एज सेंटर कंटेन एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो इधर ऐसे टाइप का बहुत सारे, मतलब आपको मिल जाएगा 12 एज सेंटर मिल जाएगा और ईच एज सेंटर कंटेन 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इधर जो एज सेंटर 12 मिल गया और इधर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसका कंट्रीब्यूशन इस लैटिस के अंदर होता है 1/4। तो आपको मिल गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो हो गया हमारा टोटल 12 एज सेंटर में है और इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/4। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर होता है, एकदम बॉडी सेंटर में। ये क्या होता है, ये भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो इसका कंट्रीब्यूशन, ये बॉडी सेंटर में है तो इसका कंट्रीब्यूशन टोटल 1 हो जाएगा, दैट मीन्स +1। तो देखो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर 1 यूनिट सेल हो गया हमारा 4। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। मतलब क्या है, आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में जो डिस्टेंस है इसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक कैसे फाइंड आउट होगा, देखो ना, इफ़ यू क्लैरिफाई दिस बॉडी डायगोनल लाइक दैट। देखो सपोज ये क्या है, बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो इधर क्या था, एक कॉर्नर में एटम था और इधर एक एटम है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, तो इसके मिडिल में एक क्या है, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और इसके बीच में देखो इधर क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड और इधर एक है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और टोटल जो बॉडी डायगोनल जो होता है उसका लेंथ क्या होता है, देखो हमारा सपोज इसका लेंथ क्या गिवन है, सपोज लेंथ जो गिवन है वो है a। हमारा जो यूनिट सेल है उसका जो एज लेंथ है वो क्या है a। तो फेज डायगोनल क्या हो जाएगा, इधर जो फेज डायगोनल वो हो जाएगा √2a। नाउ इफ़ यू कैलकुलेट द बॉडी डायगोनल वो हो जाएगा √3a। इसको कैलकुलेट करके देख लो एक बार। तो टोटल जो डिस्टेंस है बॉडी डायगोनल का वो क्या है, √3a है और वो डिवाइडेड हुआ है 4 पार्ट में। तो इसका मतलब क्या है, ईच पार्ट हो जाएगा √3a डिवाइडेड बाई 4। देखो ये वाला जो पार्ट है वो √3a/4, ये वाला जो पार्ट है वो √3a/4, ये वाला जो पार्ट है √3a/4, ये वाला पार्ट √3a/4। नाउ कोई भी क्वेश्चन पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर एटम एंड टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा, √3a/4। सपोज आपको क्वेश्चन पूछे द डिस्टेंस बिटवीन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड कॉर्नर क्या हो जाएगा, ये √3a/4 और √3a/4 सम करोगे हो जाएगा √3a/2। समझ में आ गया। और इधर क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी क्या है, √3a/4 ही होगा। तो इसका आंसर है हमारा √3a/4, मतलब ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर। द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स BF3NH3 रिजल्ट इन अ चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन। तो इसका मतलब क्या है, BF3 यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनाया है, इस कॉम्प्लेक्स में बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन का चेंज हुआ है उसको आपको डिटरमाइन करना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आइए देखते हैं इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ BF3 के बारे में, BF3 में बोरोन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो है sp2 और सेंट्रल एटम बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन एटम ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ पर जो सेंट्रल एटम बोरोन है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है और ये बिहेव होता है एज ए लुईस एसिड। नाउ NH3 जब BF3 के साथ रिएक्शन करते हैं वो एक लुईस एसिड बेस रिएक्शन होता है, क्योंकि ये तो आप सब लोग जानते हो कि NH3 एक लुईस बेस है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल होता है और इसको डोनेशन करने का टेंडेंसी है। और BF3 वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज
इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है, तो एमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, BF3 एक्सेप्ट करेगा और इन दोनों के बीच में हो जाएगा एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है इसका स्ट्रक्चर कैसे है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड में है और नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में हो गया है एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ना यहाँ पर बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन का चेंज हुआ है, देखो बोरोन के साथ 4 बॉन्ड है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो गया sp3 और स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल। तो क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछे हैं, बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या चेंज हुआ है। देखो बोरोन का जो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन था वो sp2 था और वो चेंज हो गया sp3 में, तो हमारा राइट आंसर इज फ्रॉम sp2 to sp3, that means option 4. Among the following oxoacids the correct decreasing order of the acidic strength is. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिया गया है और आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द ऑक्सीडेशन नंबर of the central atom. This is the key concept of this question. Now compound क्या क्या है देखो, फर्स्ट है HClO4, then HClO3, HClO2 एंड लास्ट में है HOCl. Now अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर कैसे होता है, HOCl इसका जो स्ट्रक्चर होता है H बॉन्ड O एंड देन Cl। HClO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे ही लिखो HOCl एंड देन 1 ऑक्सीजन इज डबल बॉन्डेड विद द क्लोरीन। HClO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ऐसे ही लिखो HOCl देन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। और लास्ट में HClO4 का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, फर्स्ट आपको ऐसे ही याद रखना है, देखो HOCl और उसके बाद यहाँ पर 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ठीक है। नाउ सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको डिटरमाइन करो, वो तो आप सब लोग जानते हो, कैलकुलेशन करना है। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +7, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3 और इधर जो क्लोरीन है यहाँ पर आएगा +1। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स HClO4 जो है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, देन ऐसे ऑर्डर होगा। तो हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। That means you have to select one option which gives the nucleophilic substitution reaction most easily. Now for the first option, here the lone pair of this chlorine atom take part in resonance with the double bond. That is clear. That means here the CCl bond get partial double bond character. Now for the option B, that is chlorobenzene, that means you know the structure of the chlorobenzene like that, and here also the lone pair present at the alternate position of the double bond. That means here also the lone pair take part in resonance and this CCl bond get partial double bond character. For the third option, here also the Cl present at the alternate position of the double bond. If you see the structure of C option, that is CH3CH double bond CH and then Cl. Here also the lone pair of the chlorine atom take part in the resonance with the double bond. That means here the CCl bond get partial double bond character. That means in the option A, B and C, the CCl bond get partial double bond character due to the resonance. But for the option D, the lone pair of the chlorine atom here does not take part in resonance because here the lone pair is not present at the alternate position. See the structure, Cl, then CH2, then CH, then double bond CH2. That means here the lone pair of this chlorine atom does not take part in resonance. So here the CCl bond is purely single bond. Clear? That means the bond energy of CCl in option A, B and C is high, but the bond energy of CCl in the option D is low. That means this Cl easily substituted by nucleophile.
So the molecule of option D take part in nucleophilic substitution reaction most easily. तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, which of the following will not give the iodoform test. देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, CH3CO CH2 CH3, मतलब ये क्या है, ये तो एक कीटोन है, और जिसमें क्या है CH3CO ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब ये तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन यहाँ पर बोला है नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, आपको समझ में आ गया। बी ऑप्शन में क्या है, देखो बी ऑप्शन में क्या है CH3CO NH2, मतलब ये एसिड एमाइड है और जो क्या है एसिड डेरिवेटिव है, और मैं पिछले स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि एसिड डेरिवेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, मतलब यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा CH3CO NH2 जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और सी ऑप्शन में क्या है CH3C जो मतलब एसिटाल्डिहाइड जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और डी ऑप्शन में है इथानॉल जिसमें क्या है CH3CHOH ग्रुप है, मतलब ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो यहाँ पर जो राइट आंसर हुआ वो राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। Experimentally, it was found that a metal oxide has formula M0.98O. The metal M present as M plus 2 and M plus 3 in its oxide. The fraction of metal which exists as M plus 3 would be. Here 4 options are given. Now in this question, the formula of the metal oxide is given. Here the metal present as M plus 2 and M plus 3. Now you have to determine the total percentage of M plus 3 in this oxide. Okay, now we consider 1 mole of metal oxide, that is M0.98O. Now here the mole of metal, that is M, equal to 0.98, and the mole of oxide O minus 2, that is equal to 1 mole. Now in this metal, here two types of metal are present. They are M plus 3 and M plus 2. Let the mole of M plus 3 equal to X. Then the number of mole of M plus 2, that is equal to 0.98 minus X. That is clear because total metal is 0.98. Now we calculate the total charge. Here the charge comes from this metal, that is M plus 3, equal to X into 3, because here charge is plus 3. That clear? Plus the charge comes from the metal M plus 2, that equal to 0.98 minus X into 2, because here charge is plus 2, and from the oxide, that is equal to minus 2, because here the charge is minus 2 and it presents 1 mole. So the total charge equal to 0, because the metal oxide is neutral. Here no charge is occur. Now if you calculate the value of X, that is equal to 0.04. Now we can say the total M plus 3 in the metal oxide, that equal to 0.04 mole. Now if you calculate the percentage of M plus 3, that equal to 0.04 divided by total metal, that is equal to 0.98 into 100, and which equal to 4.08. So the right answer is 4.08%. 7. Which of the following is a temporary effect? This question comes from the class 11 general organic chemistry. इधर बहुत ही एक important topic, that is electron displacement effect. You know electron displacement effect. And what is the meaning of electron displacement effect? देखो नेम में ही है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, और इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस होता है वो टेम्पररीली डिस्प्लेस हो सकता है और परमानेंटली डिस्प्लेस हो सकता है। दैट मीन्स
We classify the electron displacement effect in two types. One is permanent electron displacement effect, and another is temporary electron displacement effect. परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस होता है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, जैसे कि सपोज एक इंडक्टिव इफेक्ट, सपोज इसका एग्जांपल क्या है CH3Cl, तो इधर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन and due to the higher electronegativity of chlorine the electron pair of this bond comes towards the chlorine atom. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ है इसको बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, तो इसलिए ये क्या है परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ऐसे ही रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब क्या है परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। But in this question you have to determine the temporary electron displacement effect. So temporary electron displacement effect two types. One is inductomeric effect and another is electromeric effect. ठीक है, electromeric effect and another is inductomeric effect. Inductomeric effect. Now what is the example of electromeric effect? Suppose एक कार्बोनिल कंपाउंड है जहाँ पर ये जो CO बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। नाउ व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑन दिस कार्बन देन दिस पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो इधर जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस हुआ है ड्यू टू द अटैकिंग ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम आउटसाइड। तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होता। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ऐसे इंडक्टोमैरिक इफेक्ट का एग्जांपल है SN2 रिएक्शन। सपोज कार्बन के साथ एक Cl और 3 हाइड्रोजन है। क्लियर, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है बैक साइड से एंड व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बन then the sigma electron of this CCl bond displace on the chlorine atom. तो इधर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ड्यू टू द अटैकिंग ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द आउटसाइड। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं होता तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन के ऊपर डिस्प्लेस नहीं होता। तो दिस वन ऑल्सो अ टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट टू टाइप्स, वन इज परमानेंट एंड अनदर इज टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: inductive effect, resonance and hyperconjugation, and temporary electron displacement effect classified into 2 types. One is electromeric effect and another is inductomeric effect. In this problem, a gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 gram water and 3.08 gram CO2. Now you have to determine the empirical formula of the hydrocarbon. That means during combustion of this hydrocarbon produced 0.72 gram water and 3.08 gram CO2. Now you have to determine the empirical formula of this hydrocarbon. Now the hydrocarbon means it contains hydrogen and carbon. That is clear. Now you know 18 gram water contain 2 gram hydrogen. That is clear. So the hydrocarbon produced 0.72 gram water. That means 0.72 gram water contain 2 into 0.72 divided by 18 gram hydrogen, that equal to 0.08 gram hydrogen. Now you know 44 gram carbon dioxide contain 12 gram carbon. Now this hydrocarbon produced 3.08 gram carbon dioxide. That means 3.08 gram carbon dioxide contain 12 into 3.08 divided by 44 gram carbon, that equal to 0.84 gram carbon. So
we calculate the amount of hydrogen and the amount of carbon. Now we calculate the empirical formula of this hydrocarbon. For this, you have to determine the ratio of carbon is to hydrogen. That equal to the amount of carbon equal to 0.84 divided by 12 is to, for the hydrogen, that equal to 0.08 divided by 1. Here 12 is the atomic weight of carbon and the 1 is the atomic weight of hydrogen. That equal to 0.07 is to 0.08. That means 7 is to 8. So the empirical formula of this hydrocarbon, that equal to C7H8. So the right answer is option D, C7H8. Negative deviation solution among the following. This question comes from the chapter solution. And you know the solution is classified into two types. One is ideal solution and another is non-ideal solution. Ideal solution का मीनिंग क्या है? जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ. नाउ सॉल्यूशन मीनिंग द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट, एंड बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है? दो कंपोनेंट होता है. नाउ वी कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन व्हिच कंटेन A प्लस B. नाउ इधर जो दो कंपाउंड है A और B, इसका साइज, पोलर नेचर अगर सेम टाइप है तो वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा. ठीक है. नाउ दिस नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, positive deviation non-ideal solution, and another is negative deviation non-ideal solution. Okay, now for the binary solution, दो कंपोनेंट के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही अच्छा है, A और B का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है, तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन. जैसे कि फर्स्ट जो ऑप्शन है फेनॉल और एनिलीन, इन दोनों के बीच में वैन फोर्स तो है ही. उसके बाद फेनॉल और एनिलीन के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेनॉल और एनिलीन के बीच में बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है. तो ये हो गया हमारा एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन. क्लियर. एंड फॉर द पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट के बीच में कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है. तो आई थिंक पिक्चर इज क्लियर. सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल. आइडियल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का मास नियर इक्वल्स टू सेम होता है और उसका पोलर नेचर नियर इक्वल्स टू सेम होता है. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का मास और पोलर नेचर सेम नहीं होता है. और नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन मीन्स दो कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही अच्छा होगा. और पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन मीन्स जहां पर दो कंपोनेंट का एक्स्ट्रा कोई बॉन्डिंग नहीं है. तो फॉर दिस क्वेश्चन फेनॉल और एनिलीन इज द नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन ड्यू टू द एक्स्ट्रा बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Okay, see the next problem. Here one chemical equation is given. You have to determine the value of x, y and z. Now to determine this value, you have to balancing this equation. Now here MnO4 minus is converted to Mn plus 2. So write this, MnO4 minus is converted to Mn plus 2. Now to balance the oxygen, you must add 4H2O here. Now to balance the hydrogen, you must add 8H plus. Now to balance the charge, you should add 5 electron here. Now this equation is balanced. Now see here, the C2O4 minus 2 is converted to CO2. So write it, C2O4 minus 2 is converted to CO2. Now to balance the carbon, you must add
2 here. So total carbon and oxygen are balanced. Now to balancing the charge, you must add 2 electron here. That is clear. Now to eliminate the electrons, you multiply the first equation with 2 and multiply the second equation with 5 and added the whole equation. So the total equation is 2 MnO4 minus plus 16 H plus 5 C2O4 minus 2 gives 2 Mn plus 2 plus 8 H2O plus 10 CO2. Now if you compare this equation with the main equation, you get the value of x, that is equal to 2, and the value of y, that is equal to 5, and the value of z, that is equal to 16. So the values are 2, 5 and 16. That means the right answer is option C. Molarity of a liquid HCl will be, density is given 1.17 gram per cc. That means for this question density given 1.17 gram per cc. Now what is the meaning of this? 1.17 gram solute present in 1 cc solution. That means you can say the mass of the solute is 1.17 gram and the volume of the solution, that is 1 cc. Now you know the formula of the molarity, that is capital M equals to mass of solute divided by molecular weight of solute into the volume of the solution in liter. Here the mass of the solute is given 1.17 gram, put it 1.17, divided the molecular weight of the solute, that is HCl. So the molecular weight is 36.5 gram, into the volume of the solution is 1 cc, that means 1 cc, and you have to change it into the liter, that means you have to multiply it with 1000, that equals to 1170 divided by 36.5, which is equals to 32.05 molar. That means here the right answer is option B. The most volatile alkane. Most volatile means the alkane which has the less boiling point. Now see the options. The first option is N-pentane. Now what is the structure of N-pentane? That is CH3, CH2, 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 CH3. Second option is isopentane. What is the structure of isopentane? Iso means here the compound contain one methyl group in the second carbon atom. So the structure is CH3, CH, CH3, CH2, CH3. This is the structure of isopentane. Now what is the neopentane? Neo means here two methyl group presence in the second carbon atom. Therefore the structure is this. And what is the structure of N-hexane? This is the CH3, CH2, 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 CH3. This is the structure of N-hexane. Now you know, with increasing the branching, the boiling point decrease. Why? Because due to branching, it is impossible to the molecule to come close together. So the intermolecular force decrease and boiling point decrease. Now here in neopentane there has more branching, so its boiling point is low and it is the most volatile substance. So the right answer is option 3, neopentane.
Okay, now see the next question. The solubility of CaF2. Here the solubility product KSP is given in 0.1 mole solution of NaF. Now you know that CaF2 is a weak electrolyte. So it dissociates as Ca plus 2 plus 2F minus. That is clear. And the NaF is a strong electrolyte. So it completely dissociates into Na plus plus F minus. Now we assume the solubility of CaF2 is S. So it gives S mole Ca plus 2 and 2S mole F minus ion. That is clear. Now as the NaF is a strong electrolyte, so 0.1 mole NaF give 0.1 mole Na plus ion and 0.1 mole F minus ion. Now we say the concentration of Ca plus 2, that is equal to S. Now the concentration of F minus ion, that is equal to 2S here plus here 0.1, that means 2S plus 0.1. Now as CaF2 is a weak electrolyte, so the 2S is very negligible in compared to 0.1. So we can take it near equal to 0.1. Now the KSP solubility product of CaF2, that is equal to Ca plus 2 into F minus concentration of F minus square, because here the stoichiometric coefficient is 2. Therefore that is equal to S into 0.1 square. That means 0.01 S, and which equal to the solubility product here given 3.4 into 10 to the power 11. Therefore the S equal to 3.4 into 10 to the power minus 9 molar. So the right answer is option 3. See the next question. AB ionic crystal having the NaCl type structure and the edge length is 504 picometer. If the radius of the cation, that means R of Na plus, which is equal to 100 picometer, and what would be the radius of anion, that means R of Cl minus, have to determine. So here given A, that is equal to 504 picometer, and R of Na plus, which is given 100 picometer. You have to determine the R of Cl minus. That is clear. Now see the NaCl structure. That is the NaCl structure. Here the orange balls are the Cl minus, which form the packing, and the green balls are the Na plus. That is clear. Now here A is given. A means that is the A which contain 1 R of Cl minus, which is this R of Cl minus, and 2 R of Na plus, that is this is the 2 R of Na plus, and another R of Cl minus, that is the another R of Cl minus. So we can write the R of Cl minus plus 2 R of Na plus, that is this, and another R of Cl minus, this is here, equal to A. So we can write 2 of R of Na plus plus R of Cl minus, that is equal to A. Therefore R of Na plus plus R of Cl minus
that is equal to A divided by 2. Now the value of R of Na plus, which is given 100 picometer, and the value of A, which also given 504 picometer, you have to determine the R of Cl minus. Here the right answer is 152 picometer. Okay, see the next problem. The density in gram per ml of a 3.60 molar sulfuric acid solution, that is 29% sulfuric acid. Here molar mass of sulfuric acid is given 98 gram per mole by mass Willi. That means in this solution the concentration of this solution is given in percentage, that is 29%, and the concentration of this solution in molarity, that is 3.60 molar, and you have to determine the density of this solution. Now the concentration in percentage, that is 29%. That means if the mass of the solution equal to 100 gram, then the mass of solute, that is sulfuric acid, equal to 29 gram. Now in molarity, that is 3.60 molar. Now put the formula of the molarity, that is mass of solute divided by molecular weight of solute into volume of solution in liter. Now the mass of solute is given 29 gram and molecular weight of solute, that is sulfuric acid, is 98 gram per mole. Now the volume of the solution is not given. Here the mass of the solution is given. Now you have to convert it into the volume. Now you know volume, that is equal to mass divided by density. That means the volume equal to 100 divided by density. Now if you convert it into the liter, you divided it with 1000 and put this value here. Now if you put the all values, that is molarity M, that equal to 3.60 equal to mass of solute means 29 gram divided by molecular weight of the solute is 98 into volume of the solution in liter, that is equal to 100 divided by D into 1000. Now here you calculate the value of D, that is equal to 1.22. So the right answer is 1.22. Okay, see the next problem. Density of a 2.05 molar solution of acetic acid in water is 1.02 gram per ml. The molality of the solution is. That means here the concentration of the solution is given in molarity, that is 2.05 mole, and the density of the solution is given, that is 1.02 gram per ml, and the solute of this solution is acetic acid. So the molecular weight of the solute, that is 60. Now you have to determine the concentration of this solution in molality, that is small m. Now if you want to calculate this type of problem conceptually, it becomes very lengthy. So now I will give you a short formula. By applying this formula, you can calculate this type of problem where molarity and molality are interrelated. You can solve this type of problem very easily. Now see the formula. Here the formula is density D equal to molarity M into 1 divided by molality plus molecular weight of solute divided by 1000.
This is the formula. Now put the value of density, that is 1.02 gram per ml, and the value of molarity, that is 2.05 mole, and molecular weight of solute, that is 60, and calculate the value of small m, that is 2.28 mole per kg. So the right answer is option A, 2.28 mole per kg. Okay, see the next question. Benzoic acid is react with ammonia and then it is heated. Then it react with Br2KOH and then it react with CaCl3KOH. You have to determine the C. Now see the reaction. First, benzoic acid which react with ammonia. So it gives COO NH4. If you apply heat here, then H2O is removed and form this CONH2. Now this is the A. Now if you react it with Br2KOH, that means it is the Hofmann degradation reaction which produced the amine, that means NH2. It is B. Now the amine when react with CHCl3 and KOH, that means it is the carbylamine reaction, it produced the isocyanide, that means NC. It is the C. So the right answer is option 4. Next we see a very big giant type question, and also this type of question is very important for NEET and JEE exam. Now I will give you a short tricks to calculate for this type of question. Now in this question you have to determine the rate of the reaction with respect to the reactant A and B. Now see the tricks. If you focus on the first and the fourth equation, here the concentration of A is fixed, but the concentration of B become double, and for this reason the rate of the reaction become 8 times, that means 2Q. So the rate of the reaction is directly proportional with BQ. That is clear. The meaning of this is if you double the concentration of V, the rate of the reaction become 8 times. Now we focus on the first and third equation. Here the concentration of B is fixed, but the concentration of A become double, and for this reason the rate of the reaction has no changed. That means the rate of the reaction does not depends upon A. So the rate equation is only the R is directly proportional with BQ. Therefore R equal to K into BQ. This is the rate equation of this reaction. So the right answer is option C. Now let's move into the next question. Which of the following does not give the oxygen on heating? Now see the effect of heating of those 4 salts. First, if you heat the potassium dichromate, that means K2Cr2O7, it produced K2Cr O4 and Cr2O3 and the oxygen gas. Now if you heat the second salt, that is ammonium dichromate, NH4 whole 2 Cr2O7, it produced Cr2O3, water and the nitrogen gas. Now if you heat the third option,
that is KClO3, it produced KCl and O2. Now the option D, ZnClO3 whole 2, if you heat this salt, this produced ZnCl2 and oxygen. That means the potassium dichromate, KClO3 and ZnClO3 whole 2 produced the oxygen gas. That is clear. Only the ammonium dichromate not produced the oxygen gas. It produced the nitrogen gas. Therefore, here the right answer is option B, which not produced the oxygen gas. See the next question. Here the reaction is given. The question is, this reaction will be faster in. Here 4 solvents are given. Very important question, comes in NEET 2016. If you see the reaction, here propyl bromide is react with NaCN. NaCN breaks into the Na plus and Cn minus. Here Cn minus is a nucleophile which attacked in this carbon. That means it is an SN2 reaction. SN2 reaction. And we know the SN2 reaction is faster in the polar aprotic solvent. That is clear. That means from the options which is polar aprotic solvent is the right answer. Now if you see the ethanol, that means CH3, CH2, OH. Here the hydrogen atom is attached with more electronegative oxygen atom. That means it is a polar protic solvent. If you see the methanol, that is CH3OH. Here also the hydrogen atom is attached with more electronegative oxygen atom. That means it is a polar protic solvent. And if you see the option D, that is water. Here also the hydrogen atom is attached with more electronegative oxygen atom. So it also a polar protic solvent. Now if you see the option C, that is the in dimethyl formamide, which is a polar aprotic solvent. Now see the formula of this compound. NN dimethyl formamide, that means C double bond OH. Here the hydrogen atom is not directly attached with more electronegative oxygen atom. So it is a polar aprotic solvent and the reaction is faster in this solvent. So the right answer is option C. Okay, now see the next question. Which of the following alcohol will yield the corresponding alkyl chloride on the reaction with concentrate HCl ZnCl2 at the room temperature? See the reactant which is concentrate HCl ZnCl2. That means it Lucas reagent which react very quickly with 3 degree alcohol and it not react with 1 degree alcohol. So the right answer is 4. Okay, now see this question. In which case is the number of molecules of water is maximum? That means here you have to choose one option which contain maximum number of water molecules. Now if you see the first option which contain 18 ml of water, that means here the volume of water is given but the STP condition is not mentioned here. That means here we can't apply the formula volume divided by 22.4 liter. So how we determine the number of molecules? We know the density of water, that equals to 1 gram per ml. Now if you calculate the mass of 18 ml water, that equals to 18 gram water, because we know the mass equals to volume into density. That means here 18 gram water means 1 mole water. Now if you see the option B, C and D, they must be less than 1 mole. So here the maximum number of molecules contained in option A, 18 ml of water. That means here the right answer is option A.
during the electrolysis of molten sodium chloride, the time required to produce 0.10 mole chlorine gas using a current of 3 ampere is. That means here the amount of product at the anode is given 0.10 mole chlorine gas, and also the current pass during the electrolysis is given 3 ampere. You have to determine the time required to produce 0.10 mole chlorine gas at anode. Now see the reaction at the anode. That is 2Cl minus lose 2 electron and produced 1 mole chlorine gas. So you can say 1 mole Cl2 need 2 Faraday electricity, because here the change of 2 electron. So for the 0.10 mole chlorine, that means 0.10 mole chlorine needs 2 into 0.10 Faraday electricity, that equal to 0.20 Faraday electricity. That means here Q equal to 0.20 Faraday. If you convert it into coulomb, you have to multiply with 96500 coulomb. Now you have to determine the T. We know the formula is Q equal to I into T. Now the T equal to Q divided by I. That means 0.20 into 96500 divided by the value of I is 3 ampere. So 3, that is equal to 6433.33 second. But you have to convert it into minute. So divide it with 60. So you get 107.22 minute. That means it near equal to 110 minute. So the right answer is 110 minute. The solubility of AgCl with solubility product 1.6 into 10 to the power minus 10 in 0.1 molar NaCl solution would be. That means here the solubility product of AgCl in 0.1 mole NaCl solution is given 1.6 into 10 to the power minus 10. You have to determine the solubility of AgCl. Here the AgCl is a weak electrolyte, so it dissociates as Ag plus Cl minus. On the other hand, NaCl is a strong electrolyte, so it completely dissociates into Na plus Cl minus. Now if you consider the solubility of AgCl is S, then it produced S mole Ag plus and S mole Cl minus. On the other hand, 0.1 mole NaCl solution, 0.1 mole NaCl solution produced 0.1 mole Na plus and 0.1 mole Cl minus. Now the concentration of Ag plus, that equal to S, and the concentration of Cl minus, that equal to S plus 0.1. So S plus 0.1. Here AgCl is a weak electrolyte, so S is negligible with considered to 0.1. So you can consider it
near equal to 0.1. Now the solubility product of AgCl, that is KSE, equal to Ag plus into Cl minus. The value of KSP is given 1.6 into 10 to the power minus 10. So put the value 1.6 into 10 to the power minus 10, and the value of Ag plus equal to S into the value of Cl minus equal to 0.1. Now calculate the value of S, that equal to 1.6 into 10 to the power minus 9 molar. So the right answer is option 2. Now let's move into the next question. In which pair of ion both the species contain SS bond? This question comes from the p block element. If you see the structure of S4O6 minus 2, that is the structure of S4O6 minus 2, here the SS bond is present. And if you see the structure of S2O3 minus 2, this is the structure of S2O3 minus 2, here also presents the SS bond. So the right answer is option 2, S4O6 minus 2 and S2O3 minus 2. Here the electrode potential during the change from copper plus 2 to copper and from the copper plus 2 to copper plus are given. You have to determine the electrode potential during the change from copper plus to copper. Now I will give a tricks to calculate this type of problem. Now see the tricks. Here the copper plus 2 lose one electron and convert it into copper plus, and again the copper plus lose another electron and convert it into copper. That is clear. So copper plus 2 converted into copper plus first, and then the copper plus converted into copper. Here the electrode potential during the change from copper plus 2 to copper is given 0.337 here. Now the electrode potential during the change from the copper plus 2 to copper plus is given 0.153 volt. You have to determine the electrode potential during the change from copper plus to copper. Let we consider the electrode potential during the change from the copper plus to copper is X. So let it X. During the change from copper plus 2 to copper, here the number of electron lose is 2. So the 0.337 multiplied with 2, and during the change from the copper plus 2 to copper, here one electron is loose, so it multiply with 1, and from the copper plus to copper, here also one electron is changed, so X is multiplied with 1. Now write the equation, that is X into 1, that means X, plus 0.153 into 1, that means 0.153, that equal to 0.337 into 2. So 0.337 into 2, that equal to 0.674. So if you calculate the value of X, that equal to 0.674 minus
0.153, that equal to 0.52. So the right answer is option 4, 0.52 volt. Here phenyl-methyl ether react with HI produced. Phenyl-methyl ether, that means PHO CH3, it react with HI, that produced PHOH, that means phenol, with methyl iodide CH3I. Here methyl iodide is not present in the options, so the right answer is phenol. Here I give some another equation, those are interrelated. If you react methyl ethyl ether, that means CH3O C2H5 with HI, it produced methyl iodide CH3I with ethanol, that means C2H5OH. And if you react diethyl ether, that means C2H5O C2H5 with HI, it produced C2H5I, that means ethyl iodide with methanol, that means C2H5OH, when the HI is cold and dilute, and if the HI is hot and concentrate, then it produced C2H5I with 2 mole C2H5I with water H2. So remember those equations, and for this question the first equation is applicable, so here the right answer is phenol. See the seventh problem. What is the activation energy for a reaction if its rate doubles when the temperature is rise from 20 degrees Celsius to 35 degrees Celsius? That means here temperature rise from 20 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. For this change of this temperature, the rate of the reaction become double. You have to determine the activation energy of this reaction. That is clear. Now here the temperature rise from 20 to 35 degrees Celsius. That means here T1 equal to 20 degrees Celsius. If you convert it into the Kelvin, you add 273. That means T1 equal to 293 Kelvin, and T2 equal to 35 degrees Celsius plus 273, that equal to 308 Kelvin. Now here the rate of the reaction become double. That means K2 equal to 2 K1. So K2 divided by K1, that equal to 2. Now put all these value in this equation. Here K2 divided by K1 equal to 2. So log 2 equal to EA, means activation energy, divided by 2.303 into the value of R is given, that means 8.314 into 1 divided by T1 means 293 Kelvin, that means 1 divided by 293 minus 1 divided by T2 means 308. Now calculate the value of EA. Here the right answer is option 2, 34.7 kilojoule per mole. Okay, now see the next problem. Name the gas that can readily decolorized acidified KMnO4 solution. Here the color of KMnO4 solution is violet or purple.
Now when KMnO4 react with sulfur dioxide gas, the reaction is SO2 react with KMnO4 in presence of acid. It produced K2SO4 and colorless MnSO4 with sulfur trioxide and water. As MnSO4 is colorless, so the reaction become decolorized in presence of sulfur dioxide. Now see the ninth problem. The mass of the electron is given and the Planck constant also given. The uncertainty involved in the measurement of velocity within a distance of 0.1 angstrom. That means here the uncertainty of distance is given. You have to determine the uncertainty measurement of velocity. That means here given mass of electron which is equal to 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, and also the Planck constant H equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, and also given the uncertainty measurement in distance, that means del x. Here the del x is 0.1 angstrom. If you convert it into the meter, multiply with 10 to the power minus 10 meter. You have to determine the uncertainty measurement of velocity, that means del v. Now put the formula, that is del v into del x, that equal to h divided by 4 pi m. Now you have to determine the value of del v, which is equal to h divided by 4 pi m into del x. Now put the all values and calculate the value of del v. Here the right answer is option 1, which is 5.79 into 10 to the power 6 meter per second. Which of the following has the smallest ionic radius? This question comes from periodic table class 11. Generally in this type of question, the cations and anions are isoelectronic. Isoelectronic means they contain same number of electrons. Clear? Here the cation and anions are, the anions is F minus and the cations are Na plus, Mg plus 2 and Al plus 3. Clear? Here the number of proton, that is equal to, for fluorine that is equal to 9, for sodium that is equal to 11, for magnesium 12, and for the aluminium that equal to 13. And the number of electron, that for the F minus, here the number of electron equal to 10 because it gain 1 electron, and for sodium that is equal to 10 because it lose 1 electron, and for magnesium that is equal to 10 because it lose 2 electron, and for aluminium plus 3 that is equal to also 10 because it lose 3 electron. Clear? Now you see the all cations and anions are contain same number of electron, but here the difference is the number of proton. Now you know the nuclear charge is directly proportional with the number of proton. So the attraction of nucleus is high where the number of proton is high. So here the ionic radius is smallest. Clear? Okay. Now I see the short tricks for this type of question.
What is the short tricks? Here, the ionic radius is directly proportional with the negative charge. Clear? And so, the ionic radius is inversely proportional with the positive charge. That is clear. So, higher the positive charge, smallest the ionic radius. Okay. So, the right answer is option D, Al plus 3. Clear? See the next question. Calculate the number of valence electron in the complex. This question comes from the coordination compound class 12. Okay. Number of electron. We know the electronic configuration of chromium, that is 3d5 4s1. So it contribute 6 electron. Okay. And H2, that is a monodentate ligand, it give only one lone pair, so it contribute, each H2O contribute 2 electron, and SCN minus, that contribute 1 electron. Okay, so the number of valence electron, that is equal to 6 plus 5 water molecule, so 5 into 2 plus 1 SCN, so plus 1, and as here the charge is plus 2, that means it lose 2 electron, so minus 2. So the answer is 16 electron. So the right answer is option C, 16 electron. Clear? Okay, see the next question. Sublimation energy of I2 is 57.3 kilojoule per mole. That means del HS equal to 57.3 kilojoule per mole. And the enthalpy of fusion, that means del HF equal to 15.5 kilojoule per mole. You have to find out the enthalpy of vaporization of I2. That means del HV equal to. Now you write a equation I2 solid to I2 liquid to I2 gaseous. Okay. Now the enthalpy of sublimation energy. Sublimation energy means iodine solid to gaseous, that is equal to 57.3 kilojoule per mole. Now the enthalpy of fusion. Fusion means solid to liquid, that is equal to 15.5 kilojoule per mole. Clear? You have to find out the enthalpy of vaporization, that means liquid to gas. I let this is equal to X. Now I can write 15.5 plus X, that is equal to 57.3. Now X equal to 57.3 minus 15.5, that is equal to 41.8. That means the right answer is option A, 41.8 kilojoule per mole. Clear? See the next question. Ozonolysis the double bond, and which of these will give the formaldehyde? Okay. Now how will you determine the ozonolysis product? Very easy. Only divided the double bond and join 2O. Divided the double bond and join 2O. So here the product is CH3
CHO and CH3 CHO. That means 2 mole CH3 CHO, acetaldehyde. Now what is the product here? Here the products are CH3 CH2 CHO and HCHO. CH3 CH3 CH2 CHO and HCHO, formaldehyde. Okay, what is the product in the option C? Here divided the double bond and join OO. That means CH3CO CH3CO CH3 acetone, CH3CO CH3 and CH3CHO. And what is the product here? 2 mole CH3CO CH3. Clear? So where we get the formaldehyde? From the option B. So B is the right answer. Clear? Okay, now see the next question. BaCO3, which gives BaO and CO2, and it is an endothermic reaction. That means in the forward reaction heat is absorbed. Now you have to determine the condition where the formation of BaO is favored. Okay, this question comes from equilibrium class 11. Now first I write the equation, that is BaCO3, which gives BaO and CO2, and this is an endothermic reaction. That means here heat is absorbed. Clear? Okay, now see the first question. Here decrease the temperature. Now if you decrease the temperature of this system, the reaction will go to this direction where it increase the temperature. That means the reaction is go to the backward direction, because in the forward direction we see the heat is absorbed here. Clear? So first condition cancel. Now see the second condition, decrease the pressure. If you see the reactant BaCO3, it is a solid. Okay, now BaO, it also a solid, but CO2 it is a gas. So in the forward direction the pressure is increased. Clear? Now if you decrease the pressure, the reaction will go to this direction where it increase the pressure. That means the reaction will go to the forward direction. Okay, so this is the right answer. Now I see the next condition, option C, increase the concentration of BaO. If you increase the concentration of BaO, the reaction will go to this direction where it decrease the concentration of BaO. That means the reaction will go to the backward direction. Clear? Now if we increase the pressure, the reaction will go to this direction where it decrease the pressure. That means the reaction will go to the backward direction, because if we go to the forward direction, the pressure is increased because the gas CO2 is obtained. So the right answer is option B, decrease in pressure. Okay, see the next question. Lucas test used to distinguish between. Very easy question. Lucas test is used to determine the 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. So the right answer is option B. Now what is the Lucas reagent? Lucas reagent is ZnCl2 and HCl, which produced the Cl minus ion. That means it is an nucleophile. Okay, so the reaction is SN1 reaction. Here the reaction is SN1. That means here the carbocation is formed at the first. Now
for the 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol. Now the 3 degree alcohol produced the 3 degree carbocation, and which is more stable and formed more easily, and then Cl minus ion is attacked. Okay, so here the turbidity is formed instantly. Clear? But for the 2 degree alcohol which form the 2 degree carbocation, here then the Cl minus ion is attacked. So the 2 degree alcohol form the turbidity after 5 minutes. Okay, and the 1 degree carbocation is not formed, so this reaction is not possible. So the 1 degree alcohol not give any turbidity. Clear? So the Lucas test can easily distinguish the 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. Let's see the next problem. Iodoform test is shown by which of the following give the iodoform reaction? Now what is the condition for the iodoform reaction? The compound either contain CH3 CO group or the compound must contain CH3 CH OH group. Okay, example CH3 CO CH3, that is acetone which contains CH3 CO group, so it give iodoform reaction. Here has an exception which is CH3 NH CO CH3, though it contains CH3 CO group, but it not give iodoform reaction because it is an amide. Amide not give iodoform reaction. Clear? Now the next example, CH3 CH2 OH. I write it this CH3 CH2 OH which contain CH3 CH OH group, so it give iodoform reaction. Clear? Okay, let's see the options. Glycerol which is CH2 OH, CHOH, CH2 OH. Okay, next see the ethanol, that means CH3 CH2 OH which contain CH3 CHOH group, so it give iodoform reaction. Option B, propanaldehyde which is CH3 CH2 C double bond OH, propanaldehyde. So here not presents this and this group, so it not give iodoform reaction. Next option D, which contain diethyl ether. Diethyl ether means CH3 CH2 O CH2 CH3. Here also absence of this and this group, so it also not give the iodoform reaction. So which give the iodoform reaction? Option C, that means ethanol. So the right answer is ethanol. Okay, next problem, which of the following pair present the pseudo halide and polyhalide respectively? Now I discuss fourth term. First, halogen. We know halogens means fluorine, chlorine, bromine, iodine, etc. Next, interhalogen. I dot H. Interhalogen. They contain more than one halogen. They contain more than
one halogen. Example IF5. Here I and F, they are halogens. That means IF5 is a interhalogen compound. Clear? Next I discuss the next term, pseudohalite. Pseudohalite means ions contain more than one electronegative atom. More than one electronegative atom with at least one nitrogen. Clear? And it act as a halogen. So they are known as the pseudohalite ion. Example N minus, it contain nitrogen. Clear? OCN minus, it contain nitrogen. So they are the pseudohalites. Clear? Okay. Next I discuss the term polyhalite. Polyhalite means halide ion. Halide ion react with interhalogen compound. Clear? React with interhalogen compound give polyhalite. I write in short P.H, polyhalite. Example BrI, it is an, I write the example here, BrI, it is an interhalogen compound which react with I minus, this is an halide ion, give Bri2 minus, this is the polyhalite ion. This is the example of polyhalite ion. Clear? Now see the options. The option A, first example is OCN minus. It is a pseudohalite because it contain N minus. Okay. And Bri2 minus, this is the polyhalite ion. Clear? This is the polyhalite ion. So it is the right example. So the right answer is option A. Okay. See the next problem. Arene diazonium salt. That means aromatic diazonium salt, which is N2Cl. Result from the reaction of nitrous acid. So it produced by the reaction of nitrous acid means HNO2, or we say NaNO2 HCl at 0 to 5 degrees Celsius. So the what is the reactant? Here the reactant is aromatic amine, which is 1 degree amine. This react with HNO2 or NaNO2 HCl 0 to 5 degrees Celsius gives benzene diazonium chloride. Clear? So it is the 1 degree amine give this product. So the right answer is 1 degree amine. It is the right answer. Strength of 20 volume H2O2 in gram per liter is approximately. That means here the strength of H2O2 given in volume strength, that equals to 20 volume, and you have to determine the strength of H2O2 in gram per liter. Now you know the formula, the strength of H2O2 in gram per liter, which equals to 68 divided by 22.4 into volume strength, where the 68 is the molecular weight of H2O2. Now if you put the value of volume strength, you get 68 divided by 22.4 into, here volume strength is given 20 volume, which equals to 60 gram per liter.
That means here the right answer is option A, 60. Now you can remember the relation between the volume strength of H2O2 with normality and molarity. This question, here you have to determine the pair of compounds which can exist together. That means they can't reaction with each other. Now if you see the first option, here the iron presents with its highest oxidation state +3 and which can go its lowest oxidation state Fe +2. That means here reduction occur. On the other hand, in SnCl2, Sn presents with its lowest oxidation state +2 and which can go its highest oxidation state +4. That means here oxidation occur. Now if you consider these two compound FeCl3 and SnCl2, where FeCl3 undergo reduction, on the other hand SnCl2 undergo oxidation. That means they react with each other and can't exist together. Okay. Now if you see the option B, here also the mercury presents with its highest oxidation state +2 and which can go its lowest oxidation state Ag +1. That means here also reduction occur. On the other hand, in SnCl2, where Sn presents its lowest oxidation state +2 and which can go its highest oxidation state +4, that means here also oxidation occur. That means here AgCl2 and SnCl2 react with each other, so they can't exist together. Now if you see the third option, here iron presents with its oxidation state +2 and it can undergo oxidation and go its highest oxidation state +3, and the SnCl2, it also presents with its lowest oxidation state +2 and which can undergo oxidation and go its highest oxidation state +4. That means here FeCl2 and SnCl2 both can undergo oxidation, so they can't react with each other. That means they can exist together without any reaction. That means here the right answer is option C. This question basically comes from a very important topic of chemical bonding chapter, and that is the molecular orbital theory. Now if you see this question, here you have to determine a molecule which has the bond order is 1.5. That is clear. Now if you calculate the bond order in general method, that means first you write the MO electronic configuration and then you calculate the bonding electron, anti-bonding electron, and after that you calculate the bond order, that equals to bonding electron minus anti-bonding electron whole divided by 2. Now if you calculate the bond order in this method, they require a lot amount of time. So friends, here I will give a tricks. By applying these tricks, you can calculate the bond order of any molecule which has the number of electron within 10 to 18 within few seconds. Okay, now let's see the tricks. The trick says that when total number of electron is 14, then the bond order is 3 and which is maximum. Now if you decrease the total number of electron one by one, then the bond order decreases by 0.5. That means if total number of electron is 13, then the bond order is 2.5. When the total number of electron is 12, then the bond order is 2. When total number of electron is 11, then bond order is 1.5, and when total number of electron is 10, then bond order is 1. In this way, when we increase the total number of electron one by one, then also the bond order decreases by 0.5. That means when total number of electron is 15, bond order is 2.5. When total number of electron is 16, the bond order is 2. When total number of electron is 17, then the bond order is 1.5, and at last when total number of electron is 18, then the bond order is 1. In this way, we can easily remember the bond order of any molecule which has the number of electron within 10 to 18. Now let's see the question. Here 4 molecules are given. They are
O2 plus, O2 minus, O2 minus 2 and O2, and we know the number of electron of O2 is 16 and the number of electron is O2 minus, that is 18 because it gained 2 electron, and here the number of electron is 17 because it gained 1 electron, and the number of electron is O2 plus, that is 15 because it lose 1 electron. So the bond order for 14, that is 3. Now for the 15, that is 2.5, and for the 16, that is 2, for the 17, that is 1.5, and for the 18, that is 1. So friends, by applying these tricks you can calculate the bond order very easily. Now here the right answer for 1.5 bond order, that is O2 minus. So here the right answer is option B. Thank you. Hello friends, welcome to Rasayan. In this video I will discuss how will you determine the cell potential, that means standard cell potential, which indicated by E0 cell when two electrode potentials are given. Clear? Now you know the general formula for the cell potential, that is equals to E0 cell, which equals to E0 cathode minus E0 anode. That is clear. Now here two electrode potentials are given there. For tin, E0 Sn plus 4 to Sn plus 2, which equals to plus 0.15 volt, and for the chromium, the electrode potential E0 chromium plus 3 to chromium, that equals to minus 0.74 volt. Now here which one is the cathode and which one is anode? Now you know when the standard reduction potential, that means SRP value increases, then the tendency to reduce increases, and we know the reduction occur at the cathode. Reduction occur at cathode. That is clear. Now if you see the standard reduction potential value of two electrode, then the standard reduction potential value for tin is more. That means this is the cathode and this is anode. So here the E cell, that equals to plus 0.15 minus of minus 0.74 volt, that means 0.89 volt. So here the right answer is option B. This is the general method for the calculation of E0 cell. Now what is the tricks? Now the tricks is when only standard reduction potentials are given, then E0 cell, that means cell potential, equals to large value minus small value. Okay. Now if you see the electrode potential, there E0 Sn plus 4 to Sn plus 2, that equals to 0.15 volt, and E0 chromium plus 3 to chromium, that equals to minus 0.74 volt. Now here the larger value is 0.15 volt and the smaller value is minus 0.74 volt. That means E0 cell, that equals to 0.15 volt minus of minus 0.74 volt, that equals to plus 0.89 volt. Okay, you must remember one thing, that is these tricks we can apply only when the standard reduction potential value is given. Clear? Here the electrode potentials are reduction potential because the changes are Sn plus 4 to Sn plus 2, chromium plus 3 to chromium, they are reduction potential. If here oxidation potentials are given, then we first convert it
it into the reduction potential by changing its sign, and then we apply these tricks. Okay. If you have any confusion about the standard oxidation potential or reduction potential, you can see this question. Here you can see the oxidation potential is given because the changes are Zn to Zn plus 2, Fe to Fe plus 2, they are oxidation potential. Here these value are standard oxidation potential. Here you first change standard oxidation potential into the standard reduction potential by changing their sign. That is the standard reduction potential for the first one, that is minus 0.76 volt, and for the second one, that is the minus 0.44 volt. So you get the standard reduction potential value. Now you calculate the E naught cell, that equals to larger value, larger minus smaller. Okay. Now here the larger value is minus 0.44, that means minus 0.44 minus of minus 0.76, that equals to plus 0.32. So here the right answer is option D. Okay, thank you. Now see this question. Here you have to determine the series which possesses the lowest wavelength. That means the value of lambda is minimum. Now you know it become minimum when the value of 1 by lambda is maximum. We know the formula 1 divided by lambda, that equals to Rydberg constant RH into 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square. That is clear. Now we see the value of 1 by lambda is maximum. When it become maximum? Now the value of 1 by lambda, it become maximum when the value of 1 by n1 square must be maximum. That means that equals to 1, and the value of 1 divided by n2 square must be minimum, because here the minus term is given. That means that equals to 0. Now if you calculate the value of 1 divided by n1 square, that equals to 1, that means n1 equals to 1, and the value of 1 divided by n2 square, that equals to 0 when n2 equals to infinite. That means the electron comes from the infinite distance to n equals to 1. That means the series is Lyman series.